ओके। हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम टू द एजुटेक एजुकेशन। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा सेशन। क्या सभी को मेरी वॉइस आ रही है? एक बार चैट बॉक्स में यार यस या नो लिख दीजिए, क्योंकि यार आज का जो सेशन है हमारा एक अमेजिंग सेशन होने वाला है। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे सेशन की। सभी लोगों को आवाज़ आ रही है क्या? हेलो। ओके, तो आई थिंक सभी लोगों को आवाज़ आ रही है। स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सबसे पहले यार काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे कि भैया वेबसाइट से इस सेशन को कैसे एक्सेस करना है। तो बिफोर वी इवन स्टार्ट, हम सबसे पहले आ गए हैं यार हमारे न्यू टैब के ऊपर, और अब हम आपको बताने वाले हैं कैसे आपको वेबसाइट से ये सेशन को यार एक्सेस करना है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको हमारे वेबसाइट लिंक के ऊपर आ जाना है। अब लिंक टू वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल के यार आप मेन पेज पर जाओगे तो वहाँ से भी आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। इवन इफ यू वांट, आप ऐप में भी ओपन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यार कोर्सेज के ऊपर जाओगे, सीधे आपको AI 109 पे आ जाना है। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ पे आपको ब्लॉग दिखेगा। ठीक है। तो आपको ब्लॉग सेलेक्ट करना है, बट कौन सा वाला ब्लॉग सेलेक्ट करना है, क्योंकि काफ़ी सारे ब्लॉग पोस्ट हैं। तो जो सबसे पहला वाला ब्लॉग है, ज्वाइन आवर न्यू AI कोर्स 109। ठीक है।
इस पर आपको सेलेक्ट करना है और आपको क्या करना है, कंटिन्यू रीडिंग के ऊपर जाना है। जैसे आप कंटिन्यू रीडिंग के ऊपर जाओगे ना, ये पूरा पोस्ट खुल जाएगा एंड इट विल एक्सप्लेन यू व्हाई यू शुड जॉइन दिस कोर्स। ओके, सबसे पहले आपको ये पूरा रीड कर लेना है, द रीडिंग डॉक्यूमेंट, है ना। तो ये आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है, आप इसको ज़रूर रीड करें। ओके, क्या क्या आपको इस कोर्स के अंदर मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, वो सब मैंने यहाँ पे देखो लिस्ट कर दिया है। ठीक है, ये सब रीड करने के बाद जैसे आप इसको रीड कर लोगे, स्क्रॉल डाउन एट द वेरी एंड, इसमें कुछ FAQs भी आपको मिल जाएंगे। एंड दिस इज नॉट अ पेड कोर्स, तो आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन फ्री कोर्स है। जॉइनिंग लिंक आपको कुछ भी नहीं यार, एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट के ऊपर सिलेक्ट करना है एंड डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाओगे आप यूट्यूब पे, जहाँ पर आप यार ये प्लेलिस्ट अपने पेज के ऊपर यार कर सकते हो। ये रही वो प्लेलिस्ट, और जैसे ही आप प्लेलिस्ट के अंदर एंटर करोगे, यू विल फाइंड टोटल नंबर ऑफ वीडियोस। अब टिल डेट 38 है, बाय द टाइम ये नंबर इंक्रीज होगा। ठीक है, यू कैन अटेंड ऑल दीज सेशंस। इन फैक्ट आप देख सकते हो 38 सेशन इज द सेशन विच वी आर हैविंग राइट नाउ। अब भैया आप तो हर बार 2 दिन या 3 दिन बाद सेशन लेते हो, ये सेशन 4 दिन बाद आ रहा है। क्यों भाई? आई वॉज नॉट अवेलेबल ऑन मंडे, इसीलिए। चेक। ओके, वन थिंग, ये सेशन अभी लाइव है तो आप ये भी अटेंड कर सकते हो। एंड इसमें से आपने जो भी मिस किया है तो ये सेशन को आप शुरुआत से भी देख सकते हो। एंड इवन जब ये सेशन एंड हो जाता है तो आप एक्चुअल तभी भी देख सकते हो फुल। ठीक है, ओके। अगर हमारा जो पार्ट 2 का डॉक्यूमेंटेशन है जो कि हमें पढ़ना था, हम उसके ऊपर आ जाते हैं। तो वो डॉक्यूमेंटेशन आई हैव सेव्ड इट। नीचे लिंक मैंने आपको यार फुल प्लान का गिवन किया हुआ। ओके, तो यार आई थिंक अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फुल प्लान को फाइंड आउट करने में एंड डॉक्यूमेंटेशन स्क्रॉल करके एंड राइट डॉक्यूमेंटेशन फाइंड करने में। ओके, जैसे ही आप यार फुल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आओगे, मैंने आपको नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में पाथ 2 का डायरेक्ट लिंक भी दे रखा है फुल प्लान का, एंड पाथ 2 का स्लाइड शेयर लिंक भी दे रखा है। स्लाइड शेयर में तो यार एक एक लाइक जो चैप्टर्स हैं या मॉड्यूल्स है उसका लिंक मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ, आप स्क्रॉल करके देखना, मज़ा आएगा। ठीक है, so we have this, then यहाँ पे सबसे पहले साइन इन रहता है। ओके, आप एंटर हो चुके हो ऑफिशियल AI इंजीनियर प्लान के अंदर। ऑलरेडी हमने डेवलप कंप्यूटर विजन सॉल्यूशंस इन एज्योर, इसको हमने कंप्लीट किया हुआ है। फॉर द नेचुरल लैंग्वेज सॉल्यूशंस इन एज्योर we are about to end it. Only 2 modules left, only 2 modules left। लास्ट 2 मॉड्यूल्स आज हम करने वाले हैं विद अ स्पेशल सरप्राइज, विद अ स्पेशल सरप्राइज। ओके,
तो वो स्पेशल सरप्राइज क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, वेदर इट इज रिलेटेड टू दीज सेशंस और नॉट, या रिलेटेड टू द अपकमिंग सेशंस और नॉट, सब कुछ हम देखने वाले हैं। ठीक है, ओके। And why we are actually, even before I start the session, why we are actually concerned about the AI agent, यार एक्चुअल में, एक्चुअल एक कंसेप्ट बता रहा हूँ। एक्चुअल में जो भी एआई मिस्टेक्स करता है, एआई एजेंट को यूज करके हम ओवरकम कर सकते हैं उन मिस्टेक्स को। दैट इज वाई हम एआई एजेंट का यूज़ कर रहे हैं। एंड हमारा जो एजेंट होने वाला है, जो हम बनाने वाले हैं, उसमें यार हम यूज़ करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ जिसपे वॉइस इंटीग्रेशन भी आ जाएगा। तो आज हम वो सीखने वाले हैं कि वॉइस इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। देन नेक्स्ट ईयर हमारे पास में एट द एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट, ठीक है, ओके। अब मैं यार आपको बोलूँगा, यहाँ पे देखो मैंने कभी भी ये नहीं बोला है आप प्रीवियस सेशन को रिवाइज मत करो। प्रीवियस सेशन को रिवाइज करते रहिए। इनफैक्ट अब मैं आपको ये बोलूँगा कि पहले मैं आपको बोल रहा था सेशन से देखो, अब मैं बोलूँगा कि यार नोट से देखना, नोट से रिवाइज करना। फुल कंटेंट आप नोट से रिवाइज करके आना बिफोर द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज हैविंग 8 मॉड्यूल्स एंड मैं 1 मॉड्यूल इन 1 लेक्चर कंप्लीट करवाऊँ, ठीक है। या हो सकता है कि जैसे हमने ये पार्ट 2 कंप्लीट किया, देखो उतना जल्दी तो नहीं होगा, बट 1 मॉड्यूल इन 1 लेक्चर मैं कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि बीच में भाई कोई एआई स्किल्स यात्रा वाली चीज़ें नहीं आ रही होंगी, ठीक है। सीधी बात है भाई, पहले हम वो 8 मॉड्यूल्स कर लेंगे, इसके बाद एक प्रैक्टिकल सेशन तो आज मैं आपको रिवील करूंगा वो होने वाला है। क्या प्रैक्टिकल सेशन होने वाला है, हम यार एक रियल टाइम इंफॉर्मेशन लेंगे, रियल टाइम इंफॉर्मेशन से रिजल्ट एस्टैब्लिश करने के लिए एक एआई एजेंट बनाएंगे, साथ में उसमें वॉइस चीज़ें भी इंटीग्रेट करेंगे। तो आपका नेचुरल लैंग्वेज सॉल्यूशंस भी हो गया, और जो चीज़ें हम पार्ट 3 के अंदर देखेंगे वो भी हम उसमें इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो दैट विल बी अ रिवीजन of what you learned in part 1, in part 2 and part 3 में what you will learn, ठीक है। अब देखो, अब देखो, अब हो सकता है, हो सकता है अब इस लेक्चर के बाद आपका पार्ट 2 डेफिनेटली खत्म हो जाएगा, बट पार्ट 3 का क्या भैया। मैंने यार, मैंने एक चीज़ डिसाइड किया है, मैं पार्ट 3 का कंटेंट मेकिंग स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन आपके यार एग्जाम्स आ जाएंगे तो यार वैसे नॉर्मल रिकॉर्डेड सेशंस आ रहे होंगे। आप पहले एग्ज़ाम पे फोकस करके एग्ज़ाम को ख़त्म कर लीजिए, एग्ज़ाम के बाद आइए, तब तक यहाँ पे पार्ट 3 के स्लाइड शेयर बन जाएगा, स्लाइड शेयर बन जाएगा, हम पार्ट 3 डिस्कस कर लेंगे। देन वो स्पेशल सेशन आ रहा होगा। दैट मीन्स आज के लेक्चर के बाद इस कोर्स के अंदर टोटल 10 लेक्चर और आएंगे, 10 to 12, 10 to 12, ओके। तो लाइक अभी तक टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स इज 38। तो दिस full playlist will include total number of lectures that is known as 50, okay। टोटल 50 लेक्चर्स तक हम ये प्लेलिस्ट रखने वाले हैं। देन कुछ समय का ब्रेक होगा फ्रॉम द रेगुलर कोर्सेज, ओके। तो ब्रेक आप एंजॉय कर सकते हैं। देन ब्रेक के बाद हम और कोर्सेज लेके आ रहे होंगे, बट नॉट ऑफ दीज 50 लेक्चर्स पे इतने सारे 50-50 लेक्चर नहीं आ रहे होंगे। एंड वन ऑफ द मेन थिंग, मैक्सिमम लेक्चर्स यार 1 आवर प्लस के। वाई दिस, यार आपने देखा होगा मैक्सिमम सेशंस लाइव सेशंस है।
अब लाइव सेशन में मेरे को मालूम नहीं चलता यार इतना टाइमिंग हो चुका है, इतना टाइमिंग नहीं हो चुका है। ठीक है, आज का सेशन बहुत छोटा होना है एज पर सिर्फ कंटेंट के हिसाब से बताऊँ तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, तो पहले आप ध्यान रख लीजिए, सुन लीजिए। एंड यार जिसको नहीं समझ आ रहा हो ईयरफोन लगा लेना, वॉइस फुल पे कर लेना, सुन लेना ये बात। ठीक है, बिकॉज वाई एम सेइंग दिस, चलिए मैं आपको रीज़न बताता हूँ। भाई अगर मैंने मान लो सिर्फ कंटेंट कराया ना, ये लेक्चर विल बी ऑफ 10-15 मिनट्स, ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। अब आज के लेक्चर की छोड़ो, मैं तो ये सोच रहा हूँ यार देखो, आगे जो सेशंस आएंगे ना, वो यार क्यों फिर मैक्सिमम सेशंस क्यों लंबे हो जाते हैं? रीज़न यार कंटेंट बहुत रहता है ना। अगर मेरे को मालूम नहीं चलता ये कौन से मिनट पे मैं क्या बता रहा हूँ, कौन से मिनट पे मैं क्या इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, कौन से मिनट पे मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कौन से मिनट पे मैं क्या नहीं पढ़ा रहा हूँ, एंड दिस ऑल थिंग इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जब भी हम क्या है, बीच में आपने देखा होगा जब भी हम सेशन ब्रेक के ऊपर जाते हैं, सेशन ब्रेक क्या होता है भाई? अब एक 50 लेक्चर का कोर्स है, हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना 50 डेज या 50 लेक्चर्स, बीच में ब्रेक तो होता ही है। तो जब ब्रेक होता है तो आपको बता दिया जाता है, इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि दिस कोर्स इस ड्यूरेशन में ये कंटिन्यू नहीं होगा। हाँ, नॉर्मल लेक्चर्स आएंगे यूट्यूब पे एंड दैट विल बी द रिकॉर्डेड सेशंस, बट दैट वोंट बी एडेड इन दिस प्लेलिस्ट। उसका भी रीज़न मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, मेरे को कोई अब वेबसाइट पे इस कोर्स के लिए फिलहाल मैसेज मत कीजिएगा आफ्टर दिस लेक्चर। हाँ, इस लेक्चर के लिए किया, ओके डन, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, क्योंकि इस लेक्चर के लिए तो करना भी था। ओके, चलिए अब मैं आपको यार थोड़ा सा और चीज़ें समझाना चाहूँगा। हाउ डू रिवाइज, हाउ डू वी रिवाइज? क्या मैं पूरी एक एक स्लाइड को स्कैन करूँगा? क्या मैं एक एक स्लाइड का कंटेक्स्ट पढ़ूंगा? यार देखो, जो मेन मेन चीज़ होता है ना, जैसे मैंने सेशंस के अंदर पढ़ा हुआ है, वैसे आपको नहीं पढ़ना कि यार एक एक वर्ड को आपको पढ़ना है। यहाँ सेशन के अंदर इनफैक्ट क्या होता है यार, मेरे को ना उस हिसाब से पढ़ाना है, लाइक यू हैवंट नोन एनीथिंग अबाउट इट। अब यहाँ पे क्या है, आप सेशन को देख चुके हो, यू हैव द इंफॉर्मेशन, यू हैव द नॉलेज, तो अब यार टाइम सेव करो, सिर्फ मेन मेन कंटेक्स्ट को रिवाइज करो एंड मूव ऑन। एंड पीपीटी से कैसे रिवीजन करना होता है, आई हैव टॉट दिस मेनी टाइम्स इन माई सीरीज। जब मैंने पार्ट 2 स्टार्ट किया था, मैंने पार्ट 1 को पहले रिवाइज कराया था। ठीक है, आप देखना पार्ट 2 का स्टार्टिंग के लेक्चर्स मैंने स्टार्ट किया था जब मैंने पार्ट 1 को रिवाइज कराया था, मेरे को याद है। एंड अब कौन सा लेक्चर था मैं ये नहीं बताऊंगा लेक्चर नंबर, बिकॉज फिर जाके ना आप लोग उसी लेक्चर नंबर को देख लोगे। आई वॉन्ट यू स्क्रॉल थ्रू द प्ले लिस्ट एंड फाइंड दैट लेक्चर जहाँ पे मैंने रिवाइज कराया था पार्ट 1 को। एंड मैंने जिस तरीके से पार्ट 1 को रिवाइज कराया था ना, आफ्टर दिस लेक्चर आप पार्ट 2 उसी तरीके से रिवाइज करोगे। एंड आज ही करना, ये मत कर लेना यार जब मैं पार्ट 3 स्टार्ट करूंगा तब रिवाइज करना है। एक्चुअली अब मैं भी आपको बता दूं, इवन व्हेन आई टीच यू गाइस, हम भी रिवाइज करते हैं जस्ट टू रिमेम्बर यार मैंने क्या बताया था, कहीं कुछ मिस तो नहीं हो गया। वरना फिर इफ मिस हुआ, मैंने मान लो अभी मैंने वो लेक्चर का प्रॉमिस कर दिया, बाद में जब मैं पार्ट 3 पढ़ा, आई मीन बता रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ, मुझे याद ही नहीं। मैंने 8 मॉड्यूल खत्म करा है, मैंने बोला सीरीज एंड। अब आप लोग कमेंट में क्या लिखने लगे, स्पेशल सेशन का, तब मेरे को याद ही नहीं, मैं कैसे बता दूँ? इसीलिए व्हाट आई डू is I revise my content and then I know, okay, I have a special session. Yes, I remember that
स्पेशल सेशन, देन आई विल टीच। हाँ भाई, अब ये स्पेशल सेशन बताना। ये भी हो सकता है कि अभी देखो यार, मैंने ये कंटेंट क्या अभी देखो पार्ट 3 का खोल के तो देखा नहीं। तो आई थिंक ये भी हो सकता है कि इफ छोटा छोटा कंटेंट हुआ तो मैं 2 मॉड्यूल्स एक में मिला दूँ, या 4 मॉड्यूल एक में मिला दूँ। इफ 4 मॉड्यूल्स एक में मिलाए तो 2 लेक्चर, 2 मॉड्यूल एक में मिलाए तो फिर 4 लेक्चर, और एक मॉड्यूल तो 1 बाय 1 किया तो फिर 8। ओके, इस वक्त डिसाइडेड नहीं है, लेकिन डिसाइड होगा जब स्लाइड शेयर बनेगा। ओके, मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता कि मैंने लाइव लेक्चर स्टार्ट कर दिया। हम डिस्कस ही कर रहे हैं कितने लेक्चर होना चाहिए। आई डिसाइडेड आई लेट यू। ओके, बीच में अगर आपका एग्जाम्स आ गया बेटा, देन यू गो ऑन स्टडी फॉर योर एग्जाम। बट अगर नहीं आता है, आई विल रेज्यूम द कोर्स। ओके, मेरे को अब 1 हफ्ते का टाइम दे दो। आई जस्ट फर्स्टली आई मेक द स्लाइड। उसके बाद अगर आपका एग्जाम्स डिक्लेयर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो आई विल रेज्यूम द कोर्स। ओके, चलिए। नहीं नहीं, अभी एंड नहीं कर रहे हैं। तो आज का जो सेशन होने वाला है, हम आज के सेशन में लाइव रन नहीं कर रहे हैं। ओके, लाइव रन आपका पेंडिंग रहेगा। लाइव रन हम तभी कर पाएंगे जब आप यार फुल चीज़ें जो है आप यार सीख चुके हो। एंड अभी फुल सिखाना मेरे लिए भी डेंजरस है, बिकॉज मैंने लेसन प्लान वाला स्लाइड शेयर, या हो सकता है फुल स्लाइड शेयर जैसे पार्ट 1 में होना था, और एक्चुअल क्या है कि मेकिंग नहीं किया, वो रेडी नहीं किया। तो वो जब तक रेडी नहीं तब तक बताना वो चीज़ इज डेंजरस फॉर। ओके, चलिए। एज्योर वॉइस लाइव एपीआई यहाँ पे हम समझने वाले हैं। वाई यूजिंग द लाइव एजेंट, वाई यूजिंग द वॉइस एजेंट, हम चीज़ें समझने वाले हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है, यू हैव अ टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट, बट प्रॉम्प्ट जो है या 6-10 लाइनों का होता है। अब ऐसे में क्या है, आप प्रेफर नहीं करोगे दैट यू हैव टू टाइप इट मैन्युअली। आप क्या प्रेफर करोगे, आप बोल दो एजेंट को, एंड एजेंट समझ जाए व्हाट द प्रॉम्प्ट इज, without you typing manually every word, every sentence. That saves time of you as well as your agent. Okay, so that is why हमें वॉइस मॉडल की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या क्या इसके फीचर्स होंगे भाई? सबसे पहले तो इसमें यार जेसन फॉर्मेटेड फाइल्स होंगे, कन्वर्सेशन मैनेज करने के लिए, ऑडियो स्ट्रीम्स के लिए, और रेस्पॉन्सेज मैनेज करने के लिए। देन इवेंट्स होंगे कैटेगराइज इनटू क्लाइंट इवेंट्स एंड सर्वर इवेंट्स। दैट इज अ क्लाइंट सर्वर मॉडल, यहाँ पर भी हमें यूज किया जाने वाला है। कुछ की फीचर्स हैं यार, जैसे कि रियल टाइम ऑडियो प्रोसेसिंग विद सपोर्ट फॉर मल्टीपल फॉर्मेट्स लाइक BCM16 and G711, because many computer types support PCM16, some support G711. Okay. Then advanced options include OpenAI voices and Azure custom voices. We'll also use that. Then avatar integration using WebRTC for video and animation. Then built-in noise reduction and echo cancellation. These all are the key features to be included. Now let us talk about a note. Voice Live API is optimized for the Microsoft Foundry resources. This is mainly used for Microsoft Foundry resources. Inside the Microsoft 365 Copilot, आप ये वॉइस लाइव इंटीग्रेशन यूज नहीं कर सकते हो।
We recommend using Microsoft Foundry resources for full feature availability and best Microsoft Foundry integration experience. ओके, तो पहले हम क्या करने वाले हैं, पहले हम जो एजेंट वर्जन 1 क्रिएट करेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन माइक्रोसॉफ्ट 365 Copilot एंड ट्राई करेंगे ये वॉइस लाइव एपीआई वाली जो चीज़ें हैं या वॉइस लाइव के जो फीचर्स हैं या लाइव वॉइस इंटीग्रेशन माइक्रोसॉफ्ट 365 Copilot से हम इंटीग्रेट कर पाए. If not, then we will use Microsoft Foundry because it is paid platform. मैं डायरेक्ट आपको यार वीडियो डाल के दे दूंगा. इट वुड बी एनिमेटेड वीडियो, एनिमेशन के साथ आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री यूज़ करके आप एज्योर लाइव एपीआई का कैसे यूज़ करते हो, वॉइस एजेंट का या स्पेशल फीचर्स का जिनकी डिमांड आएगी. ठीक है, ओके. एट द बेसिस ऑफ डिमांड, बट जो हमारा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का मैंने आपको डिटेल बता दिया. सपोर्टेड मॉडल्स अगर आपको देखने हैं तो यार यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, जाकर देख सकते हो. कनेक्ट टू द वॉइस लाइव एपीआई, आपको कनेक्ट कैसे कैसे करना है उसका यार यहाँ पे पूरा स्टेप्स दिया हुआ. तो एज पर द डिमांड वी विल डू दिस. या मैं इसके लिए आपको यार डायरेक्ट वो वीडियो ऐड करके दे दूंगा, जैसा भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए. कुछ भी नहीं यार, यहाँ पे जो लिखा है ना उसको डायरेक्ट फॉलो करना है. ओके, आप मेरे को बता दीजिए. देखो हम क्या है, आप समझो व्हाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस. ओके, एक बार आप समझो. देखो बात क्या होती है, एक्सप्लेन करने को आई कैन एक्सप्लेन, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है आपको समझ नहीं आए. एज अ प्लेन थ्योरी जैसे कुछ चीज़ें बेटा ऐसी होती है ना कि आपको यार यहाँ पे यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. हम क्या करेंगे, लाइव प्रोजेक्ट के साथ आएंगे, प्रोजेक्ट के साथ डिस्कस करेंगे एंड प्रोजेक्ट में अगर यार इस चीज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है तो हम करेंगे. ठीक है, नहीं तो फिर हम ये भी बोल सकते हैं फॉर एक्सेसिंग द लाइव एजेंट, फॉर एक्सेसिंग द वॉइस एजेंट redirect me to Microsoft Copilot. भाई वॉइस वाला काम वहाँ पे होगा. तो दैट कुड बी वन ऑफ द थिंग. ओके, हम एजेंट में विदाउट द वॉइस भी हम काम कर सकते हैं. ठीक है, बट देखते हैं चलो एज पर द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स. भाई हम प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डिसाइड करेंगे हमें कैसा एजेंट चाहिए. ओके, दैट विल बी प्रोजेक्ट सेशन अलग आएगा. प्रोजेक्ट सेशन अलग आएगा, उसमें हम बात करेंगे. ओके, तो ये आपको तब समझ आ रहा होगा ज़्यादा डिटेल में. एपीआई की इंटीग्रेशन अगर आपको चाहिए तो वैसे यहाँ पे है वेब सॉकेट एंड पॉइंट. आप वेब सॉकेट के एंड पॉइंट्स को भी यूज़ कर सकते हो फॉर गेटिंग द एपीआई कीज. तो एपीआई कीज को गेट करने के लिए यहाँ पर आपके पास में दो मेथड्स हैं. देन एंड पॉइंट इज सेम फॉर ऑल मॉडल्स. सो एंड पॉइंट के लिए यू हैव एजेंट आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी पैरामीटर्स आपके पास में होने चाहिए. देन वॉइस एजेंट जो क्लाइंट सर्वर मॉडल को यूज़ करता है उसमें यार तीन कंपोनेंट्स होते हैं. सेशन अपडेट, मॉडिफाइज सेशन कॉन्फ़िगरेशन, input audio buffer append, add audio data to buffer, response.create generate responses via model interference. Server event provide feedback and status updates. Session updated confirm session configuration changes. Response then integrating response generation completion. Conversation.item created notify when a new conversation item is added. फुल इसका लॉग दिया हुआ है यहाँ पे विद इट्स लिंक, आप एक्सेस कर सकते हो. देन वी हैव
कॉन्फ़िगर करना वॉइस लाइव एपीआई को, तो वी हैव एग्जांपल JSON format file which we could use and run, and then the real JSON format file, then avatar integration JSON format file. Then we have, these are actually codes. We need to run this code in the Microsoft Azure PowerShell so that we could get output, because normal VS Code पे this won't work. AI voice live client library for Python. ये आपको पाइथन यूज करना है, यार यहाँ पे आपको पाइथन के यूज के लिए कोड्स मिल जाएंगे विदाउट यूजिंग द जेसन। हो सकता है कि इफ एरर पड़े देन आपको जेसन फॉर्मेट भी यूज करना पड़े, एल्स वाइज ये पाइथन के कोड से ये यूज कर सकते हो। जस्ट कॉपी पेस्टिंग कोड है, इसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन मैं दूंगा, आप फिर खुद कंफ्यूज होगा। ठीक है। Then how to create a voice live agent. You have these steps to create a voice live agent. यहाँ पे आप ये स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो एंड डायरेक्ट एक वॉइस लाइव एजेंट को आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। ओके, yeah, we are going to end this of the like lecture, and one topic will remain more, which we will cover in this lecture only, and we will complete the part 2. Okay, then we have create a voice agent in agent playground. Now you have Microsoft Foundry in action, that is you have screenshots of how the speech agent is used or is added. Then we have step by step processes, and then using code you can also do that. You can also do that, या तो आप भाई मैन्युअली ऐड कर सकते हो स्टेप्स पढ़ के फॉलो करके, नहीं तो आप यार डायरेक्ट ये कोड कॉपी करो, कोड पेस्ट करो। लेकिन यार यहाँ पे ध्यान रखना, आपको जेसन कोड पहले प्रोवाइड कर ले, क्योंकि देखो यार यहाँ पे लिखा हुआ है कहीं ना कहीं इम्पोर्ट जेसन, और जब आप जेसन कोड प्रोवाइड नहीं करोगे या जेसन फाइल प्रोवाइड नहीं करोगे तो ये किस चीज़ को इम्पोर्ट करेगा, एरर दे देगा यार यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान रखना, इम्पोर्ट जेसन है यहाँ। So these are the two methods, two different methods you can use. Then we have user agent in client application. भाई क्लाइंट एप्लीकेशन में आपको एजेंट को यूज करना है, तो कैसे यूज कर सकते हो, अगेन इसके स्टेप्स हैं, स्टेप्स फॉलो करने हैं। अब देखो यार स्टेप्स में मैं इंग्लिश का हिंदी नहीं करने वाला। ठीक है, स्मार्ट स्टडी मोड। ठीक है, मैं यार आप अन्य जो आपके एजुकेटर्स रहते हैं वह इसी चीज़ को हिंदी करने में लगे रहते हैं। मैं यार एक सेशन में मैं ओवरव्यू और मैं बता दूंगा, मैं ये मैक्सिमम सेशंस आपने देखे होंगे। व्हाट आई डू, जहाँ पे स्टेप्स रहते हैं ना, मैं आपको बता देता हूँ यार यहाँ पे ये स्टेप्स हैं, हम यार प्रैक्टिकल सेशन में हम इनको फॉलो करने वाले हैं। हो सकता है मेरे को, हो सकता है बाद में लाइव ये वापस ये प्रेजेंटेशन खोलना पड़े किसी स्टेप को देखने के लिए, बट आई वोंट राइट नाउ, वोंट एक्सप्लेन, दैट सेव्स टाइम। ठीक है, टाइम सेव होता है इससे, बिकॉज देन इफ यू फॉरगेट देन दिक्कत हो जाती है। कोड फॉर्मेट इज इजी, जहाँ पे आपको यार डायरेक्ट कोड एंटर करना होता है, यू डोंट हैव टू फॉलो एनी ऑफ द स्टेप्स एंड ऑल थिंग कोड डज। ओके, राइट, दिस इज द कोड। कोड फॉर्मेट भी आप यूज कर सकते हो, स्टेप्स फॉर्मेट भी यूज कर सकते हो ना, यू हैव टू डिसाइड
कौन सा टाइम सेविंग आपके लिए है, तो वो आप यूज़ करें। ठीक है, ओके। एंड at the very end, if you scroll down, then you have next a live exercises demonstrating it. If you want, you can now uh, go on and attempt this exercise. Once you're completed with the exercise, just scroll down and head for the module assessment. I'm providing you answers for this module assessment. Then we will go to the summary. Okay. So you will have to study these answers at your own pace. Okay. So firstly, for this question number one and two, I will provide the answer. So what do you think the answer should be? Comment your answer while I get the answer for you. Come on, guys. Come on, guys. Comment your answer right now. Okay. So the first question is, what are the two authentication methods supported by Voice Live API? Microsoft Intra Keyless and API keys. देखो, ये चीज़ जो है यार, इस स्लाइड शेयर में ये चीज़ जो है वो आपको जो है प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं की गई थी। ओके, क्यों बताऊं? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के अंदर सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा ही सपोर्ट होता है, एंड दिस वाज एक्सप्लेन टू यू इन पार्ट 01, नॉट हियर। ओके, दैट्स व्हाई यू माइट बी कंफ्यूज्ड अबाउट इट. Which protocol is used for avatar streaming integration in Voice Live API? So the answer is WebRTC. अवतार स्ट्रीमिंग के लिए यार हम यूज करते हैं वेब आरटीसी. ओके, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन नंबर वन एंड टू का. देन वी विल मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट सेट ऑफ द क्वेश्चन. ओके, देन करें, आगे मूव करें. चलिए, we have the last two set of questions again. What do you think? Comment your answers so I could fill it here. Else, wait for 1 to 2 minutes. I'll provide you the answers. What do you think for question number three and four? Come on, guys. Come on. Come on. What do you think for question number three and four? For question number three, it says, how do you configure and test voice live agent integration in Foundry Portal? फाउंड्री पोर्टल में आप यार वॉइस मोड को तो डायरेक्ट यूज नहीं करोगे. ये प्लेग्राउंड में आप कोपायलट को बोलो कि भाई वॉइस मोड चला दे. दिस इज द फाउंड्री चीज, आई मीन फाउंड्री फीचर. नो, you can't voice live is you can't. Voice live is only accessible through the REST API or Python SDK. No, REST API या Python SDK में वॉइस लाइव है ही नहीं. वॉइस लाइव सिर्फ कहाँ है? इनसाइड द फाउंड्री टूल्स इन एज्योर. ये तो मैंने बताया था, आना चाहिए भाई. इसका मतलब आपने सेशन ढंग से नहीं देखा भाई, दोबारा से देख लो आप. देख, तो यही सेशन को मैंने स्टार्ट किया था, तो वहाँ से जैसे ही सेशन को मैंने स्टार्ट किया था वैसे, आई मीन जब मैंने सेशन को यार इस सेशन को बिगेन किया था ना, तो कुछ बातें हमने की थी. उसके बाद मैंने इस क्वेश्चन का आंसर आपको दिया था जैसे ही मैंने कंटेंट स्टार्ट किया था. तो जहाँ से मैंने कंटेंट स्टार्ट किया है वहाँ पे आप जाके यार
लाइव सेशन को चेक कर लो, ये चीज़ मैंने कवर की हुई है। हाउ कैन स्टॉप ऑडियो प्लेबैक व्हेन अ यूजर इंटरप्ट्स द वॉइस एजेंट? जब यूजर वॉइस एजेंट को इंटरप्ट करेगा, तब यार ऑडियो प्लेबैक को कैसे स्टॉप कर सकते हो? इसका आंसर यू कांट नहीं है। वॉइस लाइव सेशन को आप यार बार बार रीसेट तो करोगे नहीं। हैंडल सर्वर इवेंट टाइप इनपुट ऑडियो बफर स्पीच स्टार्टेड इवेंट, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब सबमिट करते हैं एंड यू फाइंड दैट question number 1, 2 and 4 is correct. It is giving third as incorrect because in third there are two options possible. Either in Azure, either enable in in a play in playground also. Okay? Let's reattempt. Okay. Now let's reattempt. Yeah. Enable voice mode in agent playground. That is the correct answer for question number 3. How do you configure and test voice live agent integration in Foundry portal using enable voice mode in agent playground? Okay, there are actually two possibilities, but this is a strong thing because older version में यार ये भी हो जाता था, बट यार ओल्डर वर्जन ऑफ एज्योर को हटा दिया गया, नए वर्जन में ये चीज़ डायरेक्ट एज्योर एंड फाउंड्री में नहीं होता। आपको प्लेग्राउंड में जाके ये चीज़ इनेबल करना पड़ेगा, तब जाके आप यार फाउंड्री में इसको यूज़ कर पाओगे। फाउंड्री में इसको यूज़ कर पाओगे लेकिन इनेबल तो करना पड़ेगा पहले प्लेग्राउंड में जाके। अब यार यही चीज़ को अब मॉडिफाई कर दिया गया है। नाउ वी हैव द 100% ऑफ द result and the assessment is clear to us. Just a second. We have the summary here. You can attend the summary, you can feel the summary, you can revise the summary, and I think that's all complete. Okay, I'll give you 1 minute to capture the screenshot from the summary. Meanwhile, what I'm doing is I am opening another plan. Okay, so kindly go on and capture the summary before I change the slideshow. Okay, last 7 units: text and speech translation. Um, it's understandable, right? The summary. Okay. What I'll do is I'll just hit here, complete the module. You have here finally the certification. Okay. What we do before we even close it, we can tell everyone on LinkedIn. That's what we are going to do. That is creating the LinkedIn post. So
Let's post it, and the post is now live. Okay, now that's done. Now let's share our last to last, that is the last module slide share, which we will be covering, and the session will then be ended using a quick, again, 4 minutes rest. So thank you. Okay, so now we continue, and we have the last set of slides here, which we have the introduction we will be starting with, and this is the
This is let's start. That is text and speech translation, and that's once again. Now earlier we just studied opposite of it in previous slide share in the same lecture, that is text to speech. Now this will be speech to text. Okay, I believe. Okay, let's check. Yes, this will be translation in both, actually, text to speech and speech to text. So that will be a summary for you for the previous slide share, and the contents of the this slide share also covered here in briefly details. So let's start, and we will be ending up the study soon. So there are many common languages used throughout the world, and the ability to exchange information between the speakers of different languages is often critical requirement for the global solutions. Translation between the languages is a specialized skill that can often be time consuming and expensive. Automated translation is often used to reduce the time and cost involved, but it requires complex software that understands the linguistic rules and idioms for both the source and the target languages. AI models are common at the heart of the automated translation solutions, whether they be used to translate text based documents or spoken languages. In this module, you'll explore some of the ways in which you can develop AI powered translation solutions using the Microsoft Foundry. So let's begin. Translating in the Microsoft Foundry. Many LLMs can generate output in multiple languages and can create translation phases or even document. However, comprehensive multilingual translation solutions generally require specialized models, and Microsoft Foundry provides them all inside the Microsoft Azure tools. And now how and where they are located and how to do that is actually explained using a very nice figure here, that translating among the available multiple different languages, in which some languages normal people sitting in India can't understand, right? By default. So that languages you can translate in, let's say Chinese, let's say Japanese. Okay. Now this is first is text translation. Text translation is exactly that basic, where earlier we used to just manually use the translator, that is a Google translator. Now we are making an agent that is doing the same. Okay, so there are steps. How to do this is simple. Translate or transliterate transliterate text using default translation model or a large language model. We can also use the default translation model. We can also use large language model, that is the LLM. Then we have translate documents synchronously or asynchronously while maintaining document structure. Document का जो basic plan रहता है, that has not changed. Custom translation modes भी यूज किए जा सकते हैं डोमेन स्पेसिफिक टर्म्स के ऊपर. देन वी हैव एपीआईज का यूज, जैसा कि हमने प्रीवियस मॉड्यूल के अंदर देखा था, वो एपीआई यूज करके भी हम कर सकते हैं. देन एज्योर ट्रांसलेटर यूज करेंगे हम माइक्रोसॉफ्ट फाउंड्री पोर्टल के साथ इनसाइड द माइक्रोसॉफ्ट एज्योर. How to do that? Where to find that? It's all given in the screenshot with the specific locations. Okay.
This is not an explanatory image. This is just an image to help you find out the specific location of the translator text translation. Okay, which is a model inside the Microsoft Azure Foundry department, the Foundry section. Here we use the REST APIs, okay, and the SDK that is a different for Python. For Microsoft.NET, that is different process. For Java, that is a different process, and for the JavaScript, that is a different process. All processes are given to you via links. You can now check those processes. Then connect to an Azure Translator resource. You have the steps to be followed, different steps followed, or specify client to endpoint using code method. Either follow steps or mention this code and the work is exactly done. Now we have the tip here, that is Python SDK documentation, Azure Translator for more information. Then we have available languages, that is a 90 plus languages you can use using these codes. Then ISO code is here. Then again a tip. Then to translate text, you can either follow these steps. If you don't want to follow the steps, then this is the code which we can use. This is the output we get, and this is the tip. Then the translation of the text. This is the Python code. This is the output. Then the tip. That is the pattern of the slide. Last section to this very ongoing lecture, that is a translate speech. To translate speech, we use either the Azure speech translation in application code. To support speech translation, Azure Speech Providers provides an API that you can use for your application code through the translation recognizer object, which you can create by connecting to your Azure Speech resource using a speech translation config object. To do that, we have again the Python code which needs to be run. And to run this, note that here SDK, import SDK. Here SDK is getting imported. What does that mean? You need to install Python SDK before running this code. Else, in Microsoft Foundry inside the Microsoft Azure, this code will not run. Additional tab is here. Then configuring the translation languages and the input. Azure Speech can translate spoken audio input to one or more languages. You can use the speech translation config object to configure the source and the target languages, and an audio config object to specify the source audio stream. Now, a beautiful example is given here. Code configure speech translation config object for the translation from US English to French or Japanese, and uses an audio config object to specify the source audio as coming from the default system microphone. To do that, we have this beautiful Python code which we can use. Then an additional tip. Then finally, we have translate speech to text. Again, Python code for that. Then we have output for it and an additional tip. Then synthesizing translations as speech. So we have the two methods, that is a manual synthesis using the stepwise again. Next is the code synthesis
using the code for this. Okay, and this is the whole large code you can copy and paste. Event based synthesis, again, that has two types. What is the step by step following process? You can just copy the steps from here. You have link in the description. Then perform step by step the actions, or direct copy the code, paste the code in code shell and run this code. The actions will automatically be done. Now, I suggest the coding method, not the step by step method, to save your time. But if you want to learn, then go for the step by step method to learn. Okay. Then after this, we have a small tip, and next we reach to the exercise. This is the exercise which you can practice. That is a practice exercise. Then we have lastly the module assessment. We have total three questions that needs to be answered, and once we answer these three questions, we will be concluding this session again. Okay, and that will be the last two. Yes, correct. That will be the last two. This path 2. Then we will be having the path 3 soon. So for the question number 1, the correct option is translate. For the question number 2, let's see the correct option. The correct option is transliterate. For the question number 3, the correct option is for the question number 3, just a minute. Speech translation config. Let's submit. We have 100% the module assessment passed and it's clear. Next we have summary. This is the summary we have. After you can now just revise the summary, and then we end this session. Kindly take a screenshot of the summary, because now we have officially completed path 2. Okay. So I believe everyone has taken the screenshot. Now one thing, the certificate generation, module assessment passed. Now let's share this achievement. The post is now live. We go to plans page, and once finally we refresh it, we find that okay, it hasn't been stored in the system that we have completed it yet, but we have completed it. After a few minutes you can check that this will be completed. So okay, after a few minutes you can check.
else if we go inside, see it's not showing any learn this or learn this, because we have completed the content. Okay, why it hasn't count the system is completed? Because to get that XP they have to take this assessment here, an additional assessment. Okay, now you can retake this assessment to let your achievement count. And once you've taken this assessment, you can just go back and continue the next set of the work. Okay, and after doing this, you can wait for a while. It will display here that it's done. Okay, kindly wait for a while or wait for a day. It will be updated, and once it is updated, we can then start with the part 3 of this course. Okay, so thanks for joining, and if you have any confusion, you can ask. We are here for another 5 minutes, then we end this session. And thank you so much. Please subscribe this channel, like this video, and share with your friends. Okay, so and if you want, guys, you can leave now. The session is ended. Okay, thank you everyone for joining the session. Please like this video, share it with your friends, and do subscribe to my channel, Digitech Education.